Hello friends, welcome back to Markets at 316. Uh, let's talk about the markets. पिछले कुछ दिनों से markets में specifically for Nifty and Sensex I'm seeing there is nothing much happening. But what is heartwarming to see is जो mid caps and small caps and stock specific movements. They are very good in the markets and still there are opportunities out there in the market which can be uh, capitalized. सो एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू शुड कीप इन माइंड एज अ ट्रेडर और मे बी एज एन इन्वेस्टर. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. फर्स्ट एंड द foremost is silver and gold. They are in uptrend. Now, honestly, I don't know exact reason, but uptrend में है. मैं रीजन फाइंड आउट करके लेट्स ट्राई टू पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. Now, what is concerning is again DXY जो इंडेक्स है that is again moving towards 100 and क्रूड अच्छा है 2 दिन से मतलब एक दिन बाद थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है अभी लेकिन 87 पे फिर से पहुंच गया. नाउ दिस इज अ बिट कंसर्निंग पार्ट. आप पिछले कुछ टाइम से मतलब आप 20-25 दिन का अगर ये पूरा होराइजन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रूड नीचे आता है मार्केट ऊपर जाता है. मार्केट ऊपर जाना बंद होता है जब क्रूड एक लेवल पे 85 से 87 90 के बीच में ट्रेड करने लगता है और जैसे ही 90 के ऊपर जाता है मार्केट्स में फिर से करेक्शन आता है. दिस हैज बीन अ वेरी वेरी ब्रॉड एक व्यू है अभी मार्केट का और मार्केट के मूवमेंट उसी तरीके से हो रहे हैं. यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन अ लॉट ऑन क्रूड और क्रूड के हिसाब से आप अपनी पोजिशनिंग वगैरह भी कर सकते हैं मार्केट में. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी शॉर्ट टर्म. यस, लॉन्ग टर्म में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे जा रहा है बिकॉज द क्रूड ऊपर आ रहा है इस वजह से मार्केट नीचे जा रहा है तो अगर आपके जो स्टॉक्स है उसको आप मार्क करके रखिए एंड you can you can basically make your positions in that or build your positions in that. So these corrections can be used for making up or building up your positions. Now what was very interesting, कल हमने बात की थी, आई मीन आज सुबह बात की थी. मान इंडस्ट्री केम आउट विद फैंटास्टिक रिजल्ट्स and this is the trajectory and the stock of मान इंडस्ट्री, चार्ट ऑफ मान इंडस्ट्री. इट लुक्स लाइक कि अगर द नेक्स्ट स्टॉप कैन बी 744 मतलब 750 का भाव आ सकता है मान इंडस्ट्री में. आई एम नॉट सेइंग कि आएगा, आई एम सेइंग कि उसका जो यूएई का जो मिडल ईस्ट में मिडल ईस्ट का जो एक्विजिशन था उसने भी नंबर देना चालू कर दिया है ऑलरेडी. नेशनल पाइप कंपनी ऑलरेडी नंबर देना चालू कर दिया है. सो that is yet another, that is one trigger point that we can look for in मान इंडस्ट्री. अच्छी बात ये है, what I feel is uh, EBITDA margins are getting better. I am not saying कि it will just एक another level पे चले जाएंगे because this is a commodity play, but better फोकस, बेटर मिक्स एंड हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स पे कंपनी भी मूव हो रही है. एक्विजिशन बहुत अच्छा किया और इनको इक्विटी रेस करने की 100% जरूरत पड़ सकती है कंपनी को, विच द कंपनी इज सेइंग इवन इन द पीपीटी ऑल्सो. सो वी आर ऑफ द व्यू के कहीं ना कहीं द नंबर्स विल स्टे गुड एंड लेट्स सी हाउ इट रेजेस द कैपिटल. सेकेंडली, आज अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही केआरएन और सुदर्शन केमिकल इन दोनों का रिजल्ट आया था विच वी आर ट्रैकिंग एंड विच होल्ड पोजीशन इन स्मॉल केस ऑल्सो. नाउ ये दोनों स्टॉक्स के रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक. केआरएन में जो भी एक्सपेंशन था उस पर रिजल्ट आना शुरू हो गया एंड सुदर्शन में जो एक्विजिशन किया था, जो इंटरनेशनल एक्विजिशन किया था, आई एम गेटिंग अ सेंस के वहां से भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने लग गई है. दैट हैज स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन अ मीनिंगफुल वे फॉर दोज हु वांट टू
टू रीड मोर अबाउट इट, दीज आर सर्टेनली द कंपनीज जहां पे आप और पढ़ सकते हैं और अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग और बना सकते हैं इन दोनों कंपनीज को लेके, which will help you to build a right position in the company and place you in that category. So these two were outstanding results. And what actually worked today in the market was on, uh, you can say, electric power generation. So Q power, because of the result, लगातार सर्किट में स्टॉक, आज सर्किट में नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वेंट अप टू द सर्किट. ट्रांसफॉर्मर की काफी सारी कंपनीज आर अगेन कमिंग ऑन द लिस्ट. अटलांटा इज येट अनदर वेरी यंग आईपीओ है. वो भी एक कंपनी है, वो भी एक्चुअली सर्किट्स में है. सो यहाँ पे डेफिनेटली एक मूवमेंट है पावर सेक्टर को लेके, एंड खासकर ट्रांसफॉर्मर सेक्टर को लेके. एक खराब रिजल्ट जो आया, विच इज सिल्चर टेक्नोलॉजीज. नाउ आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस कंपनी फॉर लास्ट 3 to 4 years. इट हैज ट्रिमेंडस वेल्थ जनरेट करके दिया है ये कंपनी ने, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं देयर इज अ स्लो डाउन, एंड मार्केट्स हैव पनिश्ड इट लाइक एनीथिंग. तो विद द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो स्पीड आ रहा है काम करने का, उसमें कहीं ना कहीं यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी, मतलब हमें भी आगे रहना पड़ेगा. जहाँ पे रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे आ रहे हैं, वहां पे किस तरह से अपने आप को पोजीशन करें, और जहाँ पे रिजल्ट्स मार्जिन्स को लेके हिट है या रिजल्ट्स को लेके हिट है एज सच, वहां पे डू वी हैव इनफ कैश टू बिल्ड आवर कन्विक्शन, एंड हम नीचे में क्या वो स्टॉक फिर से लेने की पोजीशन में है क्या. ये इंक्रीजिंगली होता जा रहा है, और आगे भी मुझे लगता है कि ये स्टोरी बनती हुई रहेगी. So, how you are actually planning your folios, your position, how do you build your positions, and how you react on a single quarter or maybe a 2 quarter results, bad results? How do you use those results? If you can put your comments in the comment box, I will be grateful to you and happy that you share such kind of information also with us. कोई query है तो भी you can put it there. Whenever I get time, I will reply to that. So this was a wrap up today. Thank you very much. See you tomorrow.